Okay guys, so first part of cardiology has been already done. This is the second part. हमने 38 नंबर तक हमने किया हुआ था फर्स्ट पार्ट में. So before proceeding with the video, I have a very small request for you. नीचे hype का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज उस hype के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए so that this video is hyped and it can reach maximum people. ठीक है, just help me for that. Now let's move ahead with 39 number question. This is the second part of the cardiology. हाँ, first part has been already uploaded. 39 नंबर में देखो, करेक्ट पोजीशन ऑफ साइट्स ऑफ अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट वाल्व्स. ओके देखो, सो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन जाने से पहले आई विल टेल यू द करेक्ट पोजीशन ओनली. दैट्स व्हाई लेट्स सी दिस इमेज. यहाँ पे देखो, दिस ए इज द पार्ट ऑफ ऑर्टिक, ठीक है. पी इज द पार्ट ऑफ पल्मोनिक, T is the part of tricuspid valve and M is the part of generally mitral valve, जहाँ से हम हार्ट की साउंड सुनते हैं. So these are the actual places on generally our chest area on which we do the auscultation. यहाँ पे देखो, auscultation एरिया में ऑर्टिक एरिया इज राइट पैरास्टर्नल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, राइट पैरास्टर्नल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस. पल्मोनिक एरिया इज लेफ्ट पैरास्टर्नल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस. ट्राइकस्पिड एरिया इज जनरली लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. एंड जनरली mitral एरिया इज इन द लेफ्ट मेडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, दैट इज फिफ्थ कोस्टल स्पेस, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल स्पेस. सो दीज आर जनरली द साइट्स. सो यहाँ पे देखो ए बी सी डी करके दिया हुआ है. सो दिस यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच आर जनरली द करेक्ट. यहाँ पे क्या है, सो ए इज पल्मोनिक. क्या ए पल्मोनिक है? नहीं, ए इज ऑर्टिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट इट, दिस इज ऑर्टिक. B is for generally pulmonic, है ना, B is for pulmonic, that is generally the left parasternal second intercostal space. This C area is for generally what? This C is for tricuspid, ठीक है, tricuspid area. And generally this D is for generally the bicuspid area, ठीक है, bicuspid area के लिए जनरली mitral area और फिर bicuspid area, that is generally left medial to mid clavicular line, fifth intercostal space, ठीक है. सो देखो, ए इज ऑर्टिक, सो ये पहले ही कट गया. ए इज ऑर्टिक, यानी कि ये हो सकता है. बी इज पल्मोनिक, सो बी वाला भी मिल रहा है. सी इज ट्राइकस्पिड, सो सी इज ट्राइकस्पिड. एंड डी इज माइट्रल, दैट इज बाइस्पिड. सो बी विल बी आवर आंसर. इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर. सो बी इज द बेस्ट आंसर. आगे देखो, A young male had no symptoms but auscultation reveals wide fixed split S2, ठीक है, wide fixed split S2, the clinical diagnosis. Wide generally fixed split S2 is generally seen in the ASD, ठीक है, atrial septal defect. VSD में generally you will see wide variable split S2, ठीक है, wide variable. Only two words you have to focus on, two words, that is wide variable and wide fixed. So wide fixed is seen in ASD and wide variable is seen in generally VSD. V for VSD and V for variable. So wide variable split S2 is seen there and wide fixed split S2 is seen in ASD. Next यहाँ पे देखो, BAV में generally you will see single S2, ठीक है, single S2, that is nothing but bicuspid aortic valve. BAV is nothing but bicuspid aortic valve. It leads to aortic stenosis. Which murmur is shown here? यहाँ पे देखो, ये फोटो देके हमसे पूछ रहा है कि which murmur is seen there. ये S1 है, S2 है, ठीक है, S1 एंड S2 है. सो मर्मर यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है? मर्मर बिगिंस आफ्टर द इजेक्शन, क्लिक्स पीक्स इन द मिडल ऑफ द सिस्टोल एंड इंड्स एट S2. दिस इज अ फीचर ऑफ व्हाट? Ejection systolic murmur. So this is generally a feature of ejection systolic murmur. So this is ejection systolic murmur. Pan systolic murmur में क्या होगा? Intensity of murmur does not change and remains constant throughout the systole. Remains constant throughout the systole. Mid diastolic murmur में it starts after S2 and the murmur peaks in the middle of the diastole and then drops in the intensity. Next is early diastolic. Early diastolic में it starts after S2, intensity drops in the early part of diastole. So these are early diastolic. Comment on the diagnosis in the patient with rapid X and Y descent in JVP. Rapid X and Y descent in the JVP with following XR, ठीक है, CXR. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ, सो CT रेशियो अगर मैं देखूँ तो दिस इज जनरली नॉर्मल. CT रेशियो बड़ा हो जाता, मनी बैग अपीयरेंस हो जाता, कार्डियक टेम्पोनेट वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था. It is well delineated calcification around the cardiac borders. It has well delineated calcifications around the cardiac border. So this is going to be constrictive pericarditis, ठीक है, constrictive pericarditis. कार्डियक टेम्पोनेट में हमने ये क्यों नहीं होगा? कार्डियक टेम्पोनेट में देयर विल बी डिसेंट प्रोमिनेंट एंड वाई डिसेंट इज जनरली डिमिनिश्ड और वाई इज एब्सेंट करके हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है. और यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाई डिसेंट इन जेवीपी, ठीक है, एक्स एंड वाई डिसेंट, रैपिड एक्स एंड वाई डिसेंट है यहाँ पे दिया हुआ. सो दिस इज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. दिस इज नॉट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इट इज नॉट हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है.
क्योंकि ए, सी और डी, कार्डियक tamponade, dilated cardiomyopathy and hypertrophic cardiomyopathy, A, C and D, all these options have generally increased CT ratio and this CXR does not so increased CT ratio. आगे चलिए A 70-year-old man presents with complaints of breathlessness and occasional episodes of chest pain. Occasional episodes of chest pain and breathlessness. General physical examination shows a high volume pulse and BP of 150/70 mmHg. On cardiovascular examination, the apex beat is displaced 1.5 centimeter lateral to mid clavicular line. Mid clavicular line से 1.5 centimeter lateral चला गया. That indicates pathology in left side of the heart. That indicates pathology in the left side of the heart. On auscultation, diastolic murmur is heard. So if generally there is pathology in the left side of the heart and auscultation with diastolic murmur is heard, so it is going towards your aortic insufficiency. This is going towards your aortic insufficiency. What is the diagnosis? This is aortic insufficiency. Mitral insufficiency में क्या होगा? It will show pansystolic murmur. ठीक है, not diastolic murmur. Mitral insufficiency will show pansystolic murmur, and tricuspid insufficiency will generally be related with right heart pathology. ठीक है, right heart pathology, and pulmonary insufficiency again is going to be the right sided heart pathology, not the left sided heart pathology. आगे देखो, द फॉलोइंग इमेज शोज, यहाँ पे ये इमेज देखो, जनरली ये क्या हो रहा है नेल्स पे अगर आप जनरली देखो, इफ यू सी द नेल्स यू कैन सी जनरली द कन्वेक्सिटी ऑफ नेल्स, कन्वेक्सिटी ऑफ नेल्स, और पैरट बीक अपीयरेंस, कॉलर क्या है, नॉर्मल है, सो दिस इज जनरली द क्लबिंग, ये क्या है, क्लबिंग है, सो दिस इज क्लबिंग. ठीक है, साइनोसिस इज नॉट सीन बिकॉज द कलर इज नॉर्मल, साइनोसिस इज नॉट सीन हियर. रेनॉल्ड्स फिनोमेनन भी ये नहीं है, अभी रेनॉल्ड फिनोमेनन का एक क्वेश्चन आएगा. A patient with previous history of MI 3 years ago now presents with gradual increase in breathlessness. Now he is presenting with gradual increase in breathlessness on climbing the stairs. On examination, S1 is loud with S3 being heard with a bell. ठीक है, there are two parts of generally a stethoscope. One is diaphragm and one is the bell part. ठीक है, आप लोगों को पता होगा generally. So on examination, S1 is loud with S3 being heard with a bell. Which of the following is the correct diagnosis? So S3 being heard with a bell, this is congestive हार्ट फेलियर. ठीक है, दिस इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. पेरिकार्डाइटिस में चेस्ट पेन एट रेस्ट विद पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब विल बी सीन देयर. इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म इट प्रेजेंट्स विद जनरली ब्रेथलेसनेस विथ वाइड स्प्लिट S2. ठीक है, वाइड स्प्लिट S2. एलवी एन्यूरिज्म में जनरली देयर विल बी लो कार्डियक आउटपुट एंड रिक्वायर्स इको फॉर डायग्नोसिस. फिजिकल फाइंडिंग अलोन इज not sufficient to diagnose the LV aneurysm. A 30-year-old patient of valvular heart disease presents with fever for last weeks. On physical examination, the following features are noticed in this patient. Which of these will be the abdomen examination finding of this patient? Abdominal examination finding of this patient. यहाँ पे देखो, you are given a fundoscopy image. This is nothing but the Roth spots. ठीक है, these are Roth spots. यहाँ पे आप जनरली फिंगर टिप पे देख रहे हो, दिस इज जेनुअल लीजन्स. सो ऑलमोस्ट आपका डायग्नोसिस बन गया होगा. ठीक है, दीज आर नथिंग बट द diagnosis of infective endocarditis. ठीक है, these are the diagnosis of endocarditis. So look, the lesions in the infective endocarditis, the few lesions which are being like asked in most of the examination nowadays, not only in FMG but also in NEET PG and in INI-CT examination also. This infective endocarditis is a very important question. So look, what are ossular nodes in infective endocarditis? Ossular nodes are the painful and it is present in the pulp of finger and soles. Pulp of the finger and soles. These are ossular nodes and they are painful. Genuine lesions जो है वो नॉन पेनफुल होता है. सो टू मेन डिफरेंशिएटिंग थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज ऑस्लर नोड्स क्या होता है, पेनफुल होता है, एंड जेनुइन लीजन इज नॉन पेनफुल एंड इट इज प्रेजेंट इन पाम्स एंड सोल्स. रॉथ स्पॉट्स क्या है, इट इज द ओवल रेटाइनल हेमरेजेस सीन ऑन द फंडोस्कोपी, एंड स्प्लिंटर हेमरेजेस आर नथिंग बट द linear subungual dark red lesions in the fingers. These are splinter hemorrhages. ठीक है, these are splinter hemorrhages. So this is going towards your what? These are going towards your infective endocarditis. Which of these will be the abdomen examination? So infective endocarditis में abdominal examination क्या होगा? Abdominal examination में you will see splenomegaly. Due to infective emboli, it forms a splenic abscess resulting in the splenomegaly. ठीक है, not portal hypertension, not renal artery bruit and not the ascites. ठीक है, ascites वाला जनरली कंडीशन आपको मैंने पहले बताया था, राइट हार्ट फेलियर के केसेस में जनरली देखा जाता है. A 70-year-old man collapsed in his house and was rushed to the hospital. On arrival, his ECG tracing was as shown below. Which of the following is best intervention for this patient? ECG यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ देखो, हेयर इट इज यहाँ तक आ रहा है, बस अब यहाँ से क्या हो रहा है, पूरा फ्लैट लाइन आ रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द ऑसिस्टोल. ऑसिस्टोल इज अ टाइप ऑफ व्हाट, नॉन सकेबल रिदम. वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि असिस्टोल इज अ टाइप ऑफ सकेबल रिदम। नो, असिस्टोल और एसिस्टोल इज जनरली नॉन सकेबल रिदम। इसमें शॉक कोई काम नहीं करेगा। इट इज अ नॉन सकेबल रिदम एंड दिस इज नथिंग बट द कार्डियक अरेस्ट कंडीशन। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट कंडीशन। सो यूज ऑफ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इट इज जनरली नॉट recommended here because automated external defibrillator, that is AED is used in the cases of shockable rhythms, ठीक है, like ventricular tachycardia and generally the atrial fibrillation. Those are shockable rhythms, not the non-shockable rhythm. Asystole is a non-shockable rhythm. Injection of vasopressin 40 international unit, it does not play any role in condition of asystole. Injection of adrenaline, yes, this you can give. Injection of adrenaline 1 mg IV stat देना है वहाँ पे. Injection of atropine 0.5 mg IV, it is used in the management of symptomatic bradycardia, not used in the case of asystole. So very important, asystole के लिए सबसे पहले क्लियर होना है कि सॉकेबल है या नॉन सॉकेबल रिदम है। अगर नॉन सॉकेबल रिदम है तो एईडी वगैरह का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एईडी तो जनरली सॉकेबल रिदम लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर जनरली एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकीकार्डिया, इन सब चीज़ों में जनरली यूज होता है। An elderly patient with hypertension fell down in his bathroom. His BP was 220 by 110 on admission. Which of the following statement generally is correct about this patient? ठीक है, which of the following statement is correct about this patient? So यहाँ पे अगर आप देखो तो या तो इसको क्या हो सकता है, फेल डाउन विथ हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन या तो हेमोरेजिक शॉक हुआ होगा या फिर इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ होगा। दीज आर द टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन दिस केस। एल्डरली पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, बीपी 220 बाई 110 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सो जनरली यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिमाग में बना लीजिए। दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, या तो हेमोरेजिक शॉक हो सकता है या तो जनरली क्या हो सकता है, इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। सो यहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक, नॉट शॉक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक या फिर जनरली इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। सो यहाँ पे देखो, स्टार्ट एंटीप्लेटलेट्स ड्रग। इस केस में एंटीप्लेटलेट ड्रग क्या हम यूज करेंगे? नो, बिकॉज इट कैन वर्सन द सीएनएस ब्लीड इन द फर्स्ट 24 hours. ठीक है, इट कैन वर्सन CNS bleed in first 24 hours. Platelets are transfused even if the generally used even if the platelet count is not low. No, this is not recommended here. Reduce the BP to less than 120. It is somehow it can be done, but generally ये एकदम जल्दी से तो होगा नहीं. The next is putamen is the most common site. So generally the the most common site here is the putamen, जहाँ से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है जनरली. So this is generally the putamen is the most common site. ठीक है, this is our answer. A 70-year-old man has recurrent episodes of external syncope and recurrent episodes of chest pain on climbing stairs. He was diagnosed as a case of valvular aortic stenosis. Valvular aortic stenosis. Which of the following is the radiological finding of CXR of this patient? ठीक है, यहाँ पे if you see this, ठीक है, episodes of chest pain and climbing stairs. So generally recurrent episodes of exertional syncope and recurrent episodes of chest pain on climbing stairs. He was diagnosed as a case of valvular aortic stenosis. Which of the following radiological finding? So generally देखो, ये जो आपको यहाँ पे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग दिखा रहा है उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लुक, दिस इज जनरली द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, दिस इज जनरली द डायलेटेड aorta, दिस इज जनरली डायलेटेड aorta। ठीक है, दिस इज डायलेटेड aorta। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये यहाँ तक आ रहा है। ओके, सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ऑन द एक्सरे बट लेट्स ट्राई। यहाँ पे देखो, दिस इज जनरली डायलेटेड असेंडिंग aorta। ये यहाँ पे देखो, aortic arch and descending aorta is here and enlarged left ventricle is also being seen। जनरली यहाँ तक रहता है बट in this case it is enlarged। So if we see this, generally let's see the options now, let's see the options। that is the first is dilated aortic root। ठीक है, dilated aortic root। so this option A, that is dilated aortic root, it presents with conditions like Marfan syndrome and can lead to aortic regurgitation due to defective coarctation of generally the valve leaflets। B का अगर मैं आपको B वाला ऑप्शन दिखाऊं, so what is the B double atrial shadow। so double atrial shadow will be seen in case of generally the mitral stenosis। double atrial shadow will be seen in the case of mitral stenosis। एंड ऑप्शन सी जनरली, यहाँ पे देखो, ऑप्शन सी दैट इज जनरली वाइडनिंग ऑफ एंटेरियर mediastinum। इट इज सीन विथ व्हाट कंडीशन? इट इज सीन विथ जनरली द इट इज सीन विथ aortic dissection। सो बच गया क्या? एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज जनरली डी। सो दिस इज पोस्ट स्टेनोटिक डायलेटेशन ऑफ द aorta। पोस्ट स्टेनोटिक डायलेटेशन ऑफ द aorta। aortic stenosis leads to left ventricular hypertrophy, the apex is displaced inferolaterally and that's why generally it is the due to generally the post stenotic dilatation of the aorta।
नेक्स्ट देखो, अ 50-year old man presents with recurrent episodes of chest pain on exertion. He is diagnosed as a case of chronic stable angina. On routine monitoring, BP is found to be consistently elevated. On routine monitoring, BP is found to be consistently elevated. Which of the following is the best drug for the management of this patient? So 50-year-old male है, recurrent episodes of chest pain on exertion है, is diagnosed as a case of chronic stable angina. On routine monitoring, BP is found to be consistently elevated. BP क्या है, consistently elevated है. Which of the following is best drug for management of this patient? The best drug will be metoprolol, that is nothing but a beta blocker. Look, the major mortality reducing drug in the patients of chronic stable angina is nothing but this beta blocker, that is metoprolol. It produces oxygen consumption of heart and it reduces the oxygen consumption of heart and helps in improving the efficiency of the ventricular function. That's why we'll be using metoprolol, and that is nothing but a beta blocker. What is the impression from the फॉलोइंग सी एक्स आर? ये फॉलोइंग सी एक्स आर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, सो बहुत क्लियर तो नहीं है, बट यू विल बी सीइंग जनरली वायर्स, और जनरली यहाँ पे कुछ पेस मेकर कुछ प्लेस किया गया है टाइप का आपको दिख रहा है ना. सो यू आर जनरली सीइंग two wires, one going to atrium and other to the ventricle from the device whose job is to control the heart rate. So this is nothing but a pacemaker placed there. So this is a pacemaker. Chemoport device क्या होता है? It is used to deliver chemotherapy directly to subclavian vein. ठीक है, subclavian vein. And travel track for bypassing accessory pathway, it is not seen on generally plain CXR. So ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो ऐसे ही रूल आउट हो गया. ठीक है, आगे चलिए देखते हैं. A young woman presents with complaints shown above are triggered by cold temperature. हाँ, मैंने बोला था ना रेड रेनॉल्ड फिनोमेनन, देखो वही क्वेश्चन है ये. So young woman presents with complaints shown below which are triggered by cold temperature. There is no underlying comorbidity in the patient. Comment on the general the डायग्राम. ये नीचे कमेंट ऑन द डायग्नोसिस. सो व्हाट इज दिस पिक्चर शोइंग अस? ये देखो जनरली ये व्हाइट है और ये जनरली यहाँ पे ब्लू, दैट इज शोइंग यू साइनोसिस. सो दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी रेनॉल्ड फिनोमिनन. सेकेंडरी रेनॉल्ड फिनोमिनन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज देर इज नो अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी ड्यू टू विच द रेनॉल्ड फिनोमिनन इज अकरिंग. सो ये प्राइमरी रेनॉल्ड फिनोमिनन है. हार्लेक्विन साइन. सो व्हाट इज दिस हार्लेक्विन साइन? हार्लेक्विन साइन इज जनरली द asymmetric flushing and sweating of the face representing localized ipsilateral autonomic dysfunction due to cervical sympathetic deficit located at the preganglionic or postganglionic level on the non-flushing side. आगे देखो यहाँ पे एन Einham is generally the manifestation of peripheral arterial disease that leads to auto amputation of the toes in the African. Auto amputation of the toes in the Africans. So यहाँ पे toes से related कुछ भी दिया. That's why this is not our answer here. A 60-year-old woman who is a known case of generally what they are given. नोन केस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ये क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा. ठीक है, इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जामिनेशन. हर वेन्स आर इनगोज्ड शोइंग ग्रॉस एलिवेशन ऑफ ओके जेवीपी इज जनरली इंक्रीज. ठीक है, जेवीपी इज इंक्रीज्ड. हार्ट साउंड्स आर डिस्टेंट एंड ब्रेथ साउंड्स appear reduced. Breath sound appears reduced. Side suprascapular area CXR is done and shown below. Comment the diagnosis. यहाँ पे अगर आप देखोगे so they are generally telling कि heart sounds क्या है, distant, and breath sounds appear reduced. Breath sounds are generally appearing reduced. और यहाँ पे देखो this is nothing but a CT ratio increased. Money bag or generally water bottle appearance. So this is generally the कार्डियक टेम्पोनेट. ठीक है, दिस इज कार्डियक टेम्पोनेट. सो ऊपर का कुछ नहीं भी अगर मैं नहीं भी देख रहा था, फिर भी अगर क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं था, फिर भी मैंने जब पिक्चर देखा तो मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया. एंड द डायग्नोसिस इज कार्डियक टेम्पोनेट. दिस इज द मैलिग्नेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन व्हिच इज लीडिंग टू द कार्डियक टेम्पोनेट. आगे देखो, इन द गिवन ट्रेसिंग शोन बिलो HIV interval, HV interval. Okay, HV interval denotes. So this H to V, this HV interval generally denotes the antegrade conduction from the bundle of his to the branches. ये मैंने आपको जनरली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट जब मैं आपको ECG करवाऊंगा ना तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा एंड देन इट विल बी वेरी क्लियर. जनरली अगर हार्ट को आप देखो तो हार्ट में जनरली यहाँ पे क्या होता है, इफ दिस इज द हार्ट, वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ हार्ट. सो यहाँ से SA नोड से क्या होता है, नाउ इट विल कम टू जनरली SA नोड से इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, एंड देन इट विल कम टू AV नोड. AV नोड से इट विल गो टू जनरली द बंडल ब्रांचेज एंड बंडल ब्रांचेज दैट इज बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके बाद जनरली परकिंजे फाइबर्स में. दिस जनरली द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, और वही यहाँ पे दिया गया. सो एंटीग्रेड कंडक्शन फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस टू जनरली द बंडल ब्रांचेज.
ये आप एक फिगर देख सकते हो जनरली 3 इंटरवल्स ऑफ हिस बंडल इलेक्ट्रोकार्डियम पीए इंटरवल जो यहाँ पे होता है पीए इंटरवल द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एट्रियल डिपोलाइजेशन टू द ए वेव इन द एचबीई व्हिच जनरली रिप्रेजेंट्स conduction time from the SA node to the AV node and AH interval from the A wave to the start of the H spike ठीक है A wave to start of H spike A wave to start of H spike है ना A wave to start of the H spike which represents AV nodal conduction time that represents generally the AV nodal conduction time whereas HB interval represents the conduction in the bundle of the His and the bundle branches HV interval the time from the start of the H spike to the start of QRS deflection in the ECG which represents conduction in the bundle of His and the bundle branches. So you must remember this. ठीक है आगे देखो a 50-year-old lady with hypertension was admitted with breathlessness in supine position and palpitations for last 4 days. On physical examination, her heart rate is 120 by 120 per minute with generally congested neck veins. Per abdomen shows liver palpable 3 cm below the costal margin. The findings shown in the image is so यहाँ पे देखो ये एडिमा भी दिख रहा है दैट इज अ टाइप ऑफ पिटिंग एडिमा सो दिस इज द केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और वहाँ पे जनरली क्या हो रहा है लीवर में भी जनरली क्या हो रहा है सूजन हेपेटोमेगाली भी दिख रहा है सो दिस इज जनरली पिटिंग पेडल इडिमा दिस इज पिटिंग पेडल इडिमा आगे चलिए देखते हैं All are true about steps followed in management of ventricular fibrillation except CPR cycle duration is 2 minutes ठीक है chest compression at 100 to 120 ठीक है start CPR followed by immediate defibrillation ठीक है intravenous access followed by immediate defibrillation no IV access is done after defibrillation and not before ये बस एक लाइन आपको वहाँ पे पकड़ना था कि before है कि after है which of the following is used for management of this 45 65 कितना है year old patient with respiratory distress besides echo shows an ejection fraction of 35%. सो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ 35% मतलब क्या हो गया है कि जनरली कंप्रोमाइज हो चुका है सो जनरली 65 to 70% जनरली इजेक्शन फ्रैक्शन इज गुड 55% से ऊपर जितना भी है दैट इज गुड बट यहाँ पे देखो इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ 35% और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है दिस बैट विंग जनरली इडीमा दिस बैट विंग इडीमा दिस इज द केस ऑफ एक्यूट डिकम्पनसेटेड CHF ठीक है CHF ट्रीटमेंट इसमें हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट के लिए वी यूज निमोनिक है दैट इज LMNOP दैट इज लैसिक्स मॉर्फिन नाइट्रेट ऑक्सीजन एंड पोजिशनिंग ऑफ द पैशेंट दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट सो लैसिक्स नाइट्रेट्स एंड मॉर्फिन ठीक है लैसिक्स नाइट्रेट एंड morphine. Which of the following leads to a continuous murmur? So continuous murmur is seen in the case of peripheral pulmonic stenosis. Let me tell you a little bit more about this. Continuous murmurs are seen in peripheral pulmonic stenosis, coarctation of aorta, PDA, rupture of sinus of Valsalva, memory shuffle and generally the venous hum ठीक है venous hum में दिखता है which is true about postural hypotension. So which is true about postural hypertension? Postural hypertension को हम क्या ही बोलते हैं? In other words, we call it as orthostatic hypotension, which is defined as the decrease of BP greater than 20 mm of Hg, greater than 20 mm of Hg systolic and diastolic greater than 10 mm of Hg, accompanied with symptoms of cerebral hypoperfusion. So this is postural or generally the orthostatic hypotension. So इसका आंसर होगा decrease in systolic blood pressure 20 mm Hg within generally the postural change, within generally the few times of postural change, few minutes of postural change. अभी यहाँ पे आगे देखो A 60-year-old female presents with the left-sided weakness for more than 1 hour and left-sided facial weakness with BP of generally 160 by 100 mmHg. CT is normal. What is the next best step? So यहाँ पे देखो this is nothing but generally क्या है left-sided facial weakness with BP 160 by 100 mmHg CT normal. What is the next step? Now you should start thrombolysis because C is presenting with the features of left sided weakness for more than 1 hour. ठीक है diagnosis क्या होगा? This is right sided cortical stroke. That's why the प्रॉब्लम इज ऑन द लेफ्ट साइड कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के एरियाज अपोजिट को कंट्रोल करते हैं आपको पता होगा लीडिंग टू फोकल डेफिसिट्स ऑन द लेफ्ट साइड बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ अ हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट विद ईसीजी शोइंग ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद एंटीड्रोमिक टैकीकार्डिया ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद एंटीड्रोमिक क्राइटेरिया डेल्टा वेव वाला आपको याद होगा सो दैट इज नथिंग बट द वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम सो वी हैव टू स्टार्ट इंट्रावेनस प्रोकेनामाइड ठीक है इंट्रावेनस प्रोकेनामाइड which of the is not done in Wolff Parkinson White syndrome treadmill test is not done in Wolff Parkinson White syndrome आगे देखो which of the following is not correct about defibrillation easy for untrained person no it is not generally easy ठीक है
Oh no, it is easy for, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट करेक्ट अबाउट डिफिब्रिलेशन, सो दिस इज करेक्ट। अनट्रेंड पर्सन भी वहाँ पे बस देख के लगा सकता है ना। नॉट करेक्ट अबाउट डिफिब्रिलेशन, सो जनरली डिक्रीज इन सक्सेस रेट विथ डिले इन इनिशिएशन, ठीक है। ये भी इम्प्रूव प्रोग्नोसिस, ऑफकोर्स इट विल इम्प्रूव द प्रोग्नोसिस। 1 minute गैप बिटवीन टू शॉक्स, नो, दिस इज जनरली द रॉन्ग हेयर। लुक, time lag between two defibrillation shocks is 2 minutes, during which CPR is continued at a rate of 30 is to 2, 30 is to 2, so this is generally 1 minute gap नहीं होगा, there will be 2 minutes gap. Modified Duke's criteria are used for diagnosis of course that is infective endocarditis, all of us know. Which of the following shall be seen with the use of a small size BP cuff? अगर BP cuff का size small होगा, that will lead to false elevation of the BP, ठीक है, false elevation of the BP. Rescue PCI, percutaneous intervention, is done for which of the following? So it will be done for generally the persistent chest pain with ST elevation greater than 90 minutes after the thrombolysis. Look, rescue PCI should be done in case of failure of reperfusion, which is defined as persistent chest pain and ST segment elevation greater than 90 minutes. Primary PCI is done in cases of STEMI and should have a door to device time of less than 90 minutes, and window period for thrombolysis in STEMI is generally 12 hours. These again are some of the questions that has been asked. Which of the following conditions should not be considered if JVP rises on deep inspiration? और JVP rise करता है deep inspiration पे, तो atrial fibrillation should not be considered. ये तीनों चीज consider किया जा सकता है। Normally what happens? Normally the JVP falls with inspiration. In constrictive pericarditis, it is characterized by presence of calcification around the ventricles, जो हमने क्वेश्चन में भी देखा था आगे। Hence the compliance of heart is reduced and it cannot accommodate the blood. This leads to elevated GVP on inspiration. Restrictive cardiomyopathy में generally क्या होगा? Poor heart function and leads to reduced compliance of the heart. This explains rise of GVP again on inspiration, whereas the complete heart block is characterized by no conduction at level of AV nodes. This leads to AV dissociation and presence of a giant waves on JVP. Hence JVP will rise with inspiration. That is generally choice D is characterized by twitching of atria and absence of A waves, ठीक है, twitching of generally atria and absence of A waves on JVP. Hence JVP cannot rise on inspiration. That's why यहाँ पे किस में नहीं होगा? Atrial fibrillation में नहीं होगा। Which of the following is not associated with pulmonary artery hypertension? That is PAH. Left ventricular hypertrophy is not associated with pulmonary artery hypertension. It is due to the constriction of the pulmonary bed secondary to chronic hypoxia, and interstitial lung disease leads to lung shrinkage, and mitral stenosis due to pulmonary edema leading to hypoxia, and hence PAH will be developing. This is the complete pathophysiology here. Core pulmonary is right-sided heart failure due to generally the pulmonary artery hypertension. Leading cause of core pulmonary is COPD. A patient presents with pedal edema with water hammer pulse. So water hammer pulse is seen in high output cardiac failure, ठीक है। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर कॉज्ड बाय जनरली वेट बेरीबेरी। सो बेरीबेरी किससे होता है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। सो वेट बेरीबेरी, दिस डेवलपमेंट ऑफ CHF कैन एक्सप्लेन द पीटल और पेरिऑर्बिटल एडिमा ऑफ द पेशेंट। दैट्स व्हाई ये बहुत घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर बायोकेमिस्ट्री, सो दिस इज द आंसर। Which is correct about the ECG finding of the hypocalcemia? Look, QT prolongation किन किन चीज़ों में होती है? देखो, look, QT prolongation is in the case of hypocalcemia, hypomagnesemia, hypokalemia, that is prolonged QU interval will be seen there. Class 1A and 3 drugs, generally subarachnoid hemorrhage and long QT syndrome में QT will be prolonged. QT shortening दिखेगा आपको hypercalcemia digoxin में, congenital generally the this syndrome. So this QT shortening will be seen there. So which is correct about the ECG finding of hypocalcemia? Hypocalcemia there will be prolonged QT. Which is the preferred bypass graft used in CABG? CABG में the preferred generally bypass graft is generally internal mammary artery. Internal mammary artery. Most of us get confused with this saphenous vein. So saphenous veins comes second to internal mammary artery. So best choice is internal mammary artery. If it is not in the question, go for saphenous vein. Next is wide fixed split S2 is seen in wide fixed split S2 हमने पहले भी किया था। लुक, ASD वाइड फिक्स्ड स्प्लिट, मैंने बोला था VSD में जनरली वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल नॉट फिक्स्ड। सो VSD में जनरली वाइड वेरिएबल स्प्लिट S2, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में सिंगल S2, ASD में वाइड फिक्स्ड S2 एंड PDA में नैरो स्प्लिट S2 विल बी सीन। What is the earliest change in ECG in case of hyperkalemia? Hyperkalemia में सबसे फर्स्ट चेंज आएगा, दैट इज टॉल टेंटेड ट्यूब। पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। देयर विल बी टॉल टेंटेड ट्यूब। ओके, सो लुक, अगर मैं ECG फाइंडिंग ऑफ हाइपरकैलेमिया की बात करूं, टॉल टेंटेड ट्यूब होता है। अगर पोटासियम की बात करूं, द सीरम पोटासियम दैट इज 5.6 to 6.5 है अगर जनरली, सो जनरली क्या हो जाएगा? ECG विल बी टेल
peaked, tall peaked generally T waves. 6.5 to 7.5 पे अगर जाएगा तो दैट इज जनरली लॉस ऑफ पी वेव्स विल बी सीन. 7 to 8 पे जनरली वाइड क्यूआरएस एंड पीआर प्रोलोंगेशन विल बी सीन. व्हेयरएज ग्रेटर देन 8 पे जाएगा तो साइन वेव पैटर्न विल बी सीन. ठीक है. सो दिस आर जनरली द changes on the ECG. Which rhythm disorder is shown in this ECG? ये ECG देखो और इसमें मुझे बताओ कि जनरली which rhythm disorder is shown here. So this the heart rate यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, so first if you calculate the heart rate, so generally calculate heart rate करने के लिए सेकंड लीड पे जाके आप क्या करो कि ये गिन लो, है ना, आपको आता है कैलकुलेट करने. So the heart rate here is generally almost 150 beats per minute. ठीक है, 150 बीट्स पर मिनट. नेक्स्ट इज जनरली एक्सिस क्या है, एक्सिस इज नॉर्मल. यहाँ पे देखो ये नीचे है P1 लीड में, सो द एक्सिस इज नॉर्मल. नेक्स्ट जनरली द पी वेव्स आर एब्सेंट विथ नैरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस. सो यहाँ पे देखो पी वेव्स एब्सेंट है ना. अगर सेकंड लीड में देखो तो पी वेव्स आर एब्सेंट एंड क्यूआरएस इज वेरी नैरो, क्यूआरएक्स इज वेरी नैरो एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इज नोटेड इन लीड 2. लीड 2 में अगर आप जाओगे तो एसटी डिप्रेशन इज नोटेड हेयर. लीड 2 में एसटी डिप्रेशन इज नोटेड एंड जनरली अगर इतना चीज है कि जनरली हार्ट रेट 150 बीपीएम है, एक्सिस नॉर्मल है, P waves are absent with narrow complex QRS, so this is going to answer paroxysmal supraventricular tachycardia. Which is incorrect about the ECG shown below? Which is incorrect about the ECG shown below? यहाँ पे जो ECG दिखाया हुआ है इसमें सबसे incorrect क्या है? So normal QT interval is 360 to 440 milliseconds. Average 400 millisecond होता है. QT interval is written wrongly as 0.04 seconds. So इसको क्या होता है 0.4 seconds कहना चाहिए हमको. ठीक है, सेकेंड्स कहना चाहिए. सो 0.04 लिखा हुआ है, सो दैट इज रॉन्ग आंसर. ठीक है, 0.4 सेकेंड्स होना चाहिए. नेक्स्ट, द ECG फाइंडिंग सोन बिलो इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स. ये ECG फाइंडिंग यहाँ पे जो दिखा रहा है, दिस इज जनरली ड्यू टू, ये हार्ट रेट यहाँ पे देखो, हार्ट रेट यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, दैट यू विल गेट आउट 70 बीट्स पर मिनट, है ना, 70 बीट्स पर मिनट. एंड एक्सिस क्या है, एक्सिस इज नॉर्मल. ये देखो V1 पे नीचे है, सो दिस इज एक्सिस इज नॉर्मल. P and PR interval and QR complex is of generally normal duration. Lead 2 and chest lead V3 shows T wave inversion with generally T wave inversion with generally the presence of U wave suggestive of U wave अगर आ रहा है, so this is suggestive of generally the hypocalcemia. So this is suggestive of hypocalcemia. Hypocalcemia किस ड्रग के वजह से हो सकता है, ये देखो B, ARB and generally C, ACE inhibitors. So these will generally lead to hyperkalemia and tall tented T waves. Whereas in the ECG the T waves are generally inverted here, so T wave is inverted, so this is hypokalemia. This can be seen with the drugs like diuretics. ठीक है, diuretics. बीटा ब्लॉकर्स तो यहाँ पे होगा ही नहीं बिकॉज ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे है ही नहीं. Which of the following is correct about the image shown below? ये यहाँ पे जो इमेज दिखा रहा है, इस इमेज के लिए which is the correct? So this is generally the ventricular tachycardia because broad complex QRS with heart rate of 200. That is diagnosis of ventricular tachycardia. During CPR, when is vasopressin given? Vasopressin has no role during the CPR. Which antiarrhythmic drug is given in post-resuscitation arrhythmia? Post-resuscitation arrhythmia में you will give amiodarone. In JVP, Y descent is absent and X wave is prominent. This is suggestive of Y descent absent यानी कि cardiac tamponade. Digitalis is used in mitral stenosis when patients develop atrial fibrillation and murmur heard in aortic stenosis is right second intercostal low pitch murmur, that is aortic stenosis में. So this ends our all the past year questions of this FMGE in the cardiology of the medicine session. In the next topic we will be starting with some other topics. देखते हैं इसके बाद कौन सा है, neurology. So I think I'll go with neurology in the next topic. So for today this much and I will meet you in the next video. Please don't forget to hype the video, जिससे क्या होता है कि वीडियो का रीच बढ़ जाएगा and it will reach more people. ठीक है, if you have any suggestions that also you can write in the comment box. Thank you so much.